हेलो फ्रेंड्स, मोंगोडीबी इस सब्जेक्ट की हमने जो एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट की है। इस एमसीक्यू की सीरीज के लेक्चर नंबर 2 में हम जिस टॉपिक के एमसीक्यू देखने वाले हैं वो है टॉपिक नंबर 2, मोंगोडीबी बेसिक। तो इस टॉपिक के जो है टोटल 20 प्लस एमसीक्यू इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो 20 एमसीक्यू है हम विद द एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं, तो वीडियो जो है लास्ट तक जरूर देखें। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंटरेक्टिव सेल फॉर अ मोंगोडीबी कॉल्ड डैश डैश। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मोंगो, ऑप्शन बी मोंगोडीबी, ऑप्शन सी डीबी मोंगो एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द मेंशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मोंगो। द इंटरेक्टिव सेल फॉर मोंगोडीबी इज कॉल्ड मोंगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए Human IO is the web-based GUI for MongoDB. Option B, Mongo 3 is a Java-based GUI. Option C, no SQL manager for MongoDB is an EMS Windows GUI application for MongoDB management with Shell. And option D, all of the mentioned. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नो SQL manager for MongoDB is an EMS Windows GUI application for MongoDB management with Shell. Next question है, administrative information in MongoDB can also be accessed through dash dash. इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए डैशबोर्ड, ऑप्शन बी वेब इंटरफेस, ऑप्शन सी PSQL शेल एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द मेंशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी वेब इंटरफेस। Administrative information in MongoDB can be accessed through web interface. Next question है, which of the following is web-based client software for MongoDB? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए BI Studio, ऑप्शन बी डेटाबेस मास्टर, ऑप्शन सी फैंग ऑफ मैंगो एंड ऑप्शन डी मोंगो 3। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी डेटाबेस मास्टर। Database Master is the web-based client software for MongoDB. Next question है, dash dash provides statistics on the per collection level. तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मोंगो स्निप, ऑप्शन बी मोंगो टॉप, ऑप्शन सी मोंगो ऑपलॉग एंड ऑप्शन डी मोंगो फाइल्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मोंगो टॉप। मोंगो टॉप प्रोवाइड्स स्टैटिस्टिक्स ऑन द per collection level. Next question है, amongst which of the following is true about MongoDB? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए MongoDB is a cross platform database, ऑप्शन बी document oriented database, ऑप्शन सी high performance database एंड ऑप्शन डी all of the mentioned above. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी all of the mentioned above. MongoDB is the cross-platform, document-oriented and high-performance database. Next question है, the data model available within MongoDB allows us to represent dash dash. तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए hierarchical relationship, ऑप्शन बी able to handle complex structure, ऑप्शन सी both A and B एंड ऑप्शन डी none of the mentioned above. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी both A and B. The data model available within the MongoDB allows us to represent hierarchical relationship and able to handle complex structures. Next question है, a record in a MongoDB is a dash dash. तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए डॉक्यूमेंट, ऑप्शन बी टेबल, ऑप्शन सी एप्लीकेशन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द मेंशन अबव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए डॉक्यूमेंट। A record in a MongoDB is a document. नेक्स्ट क्वेश्चन है, MongoDB stores document in a dash dash. इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्टोर, ऑप्शन बी कलेक्शंस, ऑप्शन सी इंडेक्सेस एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द मेंशन अबव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कलेक्शंस। MongoDB stores document in a collections. Please like the video and subscribe the channel Code Learning for more MCQ videos. नेक्स्ट क्वेश्चन है, the collection screen dash dash the exist collections. इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लिस्ट,
ऑप्शन बी पैकेज, ऑप्शन सी नेटवर्क एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द मेंशन अबव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लिस्ट। द कलेक्शन स्क्रीन लिस्ट द एग्जिस्टिंग कलेक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलेक्शन स्क्रीन डिस्प्ले डैश डैश फॉर ईच कलेक्शन इन द सिलेक्टेड डेटाबेस। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए कलेक्शन नेम, ऑप्शन बी नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट इन द कलेक्शन, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द मेंशन अबव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। द कलेक्शन स्क्रीन डिस्प्ले collection name and number of documents in the collection for each collection in the selected database. Next question है a document is a set of dash dash। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए की वैल्यू पेयर, ऑप्शन बी एप्लीकेशन पेयर्स, ऑप्शन सी एक्टिविटी पेयर सेट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द मेंशन अबव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए की वैल्यू पेयर्स। A document is a set of key value pairs. Next question है amongst which of the following is true about the authentication। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए it is a process of verifying the identity of a client, ऑप्शन बी it is a process of verifying network, ऑप्शन सी it is a process of verifying the database and ऑप्शन डी none of the mention above। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए इट इज द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द आइडेंटिटी ऑफ द क्लाइंट। ऑथेंटिकेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द आइडेंटिटी ऑफ अ क्लाइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश डैश डेटा मॉडल्स अलाउज एप्लीकेशंस टू स्टोर रिलेटेड पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन इन द सेम डेटाबेस रिकॉर्ड। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए एम्बेडेड, ऑप्शन सी एक्सटर्नल एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द मेंशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी embedded। Embedded data model allows applications to store related pieces of information in the same database record। Next question है embedded data model is used when you have dash dash relationship between the entities। ऑप्शन ए contents, ऑप्शन बी is a, ऑप्शन सी inheritance एंड ऑप्शन डी all of the mention। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए contents। Embedded data model is used when you have contents relationship between the entities। Next question है normalized data models describe relationships using dash dash between documents। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए relativeness, ऑप्शन बी references, ऑप्शन सी evaluation एंड ऑप्शन डी none of the mention। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी references। Normalized data models describe the relationship using references between documents। Next question है to interact with embedded documents use dash dash notation to reach into embedded document। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए पीरियड, ऑप्शन बी डॉट, ऑप्शन सी कॉमा एंड ऑप्शन डी कोलन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी डॉट। To interact with embedded document use dot notation। Next question है to get the current number of namespaces in the Mongo cell use dash dash। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए db dot system dot namespace dot count c parenthesis, ऑप्शन बी db dot system dot namespace dot count within parenthesis star sign, ऑप्शन सी db dot system dot namespace dot count parenthesis एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द मेंशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी db dot system dot namespaces dot count parenthesis। नेक्स्ट क्वेश्चन है द dash फीचर ऑफ कलेक्शंस expires document after a period of time। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए tel, ऑप्शन बी ttl, ऑप्शन सी टीपीएल एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द मेंशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी टीटीएल। द टीटीएल फीचर ऑफ कलेक्शंस एक्सपायर्स द डॉक्यूमेंट आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कैप द कलेक्शन प्रोवाइड डैश डैश मैनेजमेंट ऑफ इंसर्टेड डॉक्यूमेंट इन MongoDB। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए FIFO, ऑप्शन बी LIFO, ऑप्शन सी LRU एंड ऑप्शन डी MRU।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए FIFO. FIFO means first in first out. Kept collection provides FIFO management of inserted document in MongoDB. तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप जो है चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। Thank you. Please like the video and subscribe the channel Code Learning for more MCQ videos.